so that I get a sustained oscillation. So wherever I'm losing energy, that has to be resupplied. Okay? So in real world, like if you take automobile, what do you have? Pay attention. In automobile, what do you have? Engine. So engine में क्या होता है? It has a piston. So when you actually start an engine, what are you doing actually? You are setting this piston into vibration. It goes up and down. Then what this piston does is, it is connected to a crankshaft. Okay. So it basically actually starts, it is connected like this. There is a pulley, for example. And there is a shaft which goes to wheel. So when it goes up and there is a flexible connection over here, it sets into rolling motion. So the up and down motion of the engine converts the vibrational motion into rotational motion. That's how the wheel turns. तो इंजन अगर एक बार चालू हो के बंद हो गया ऐसे, तो हमारी कार तो जाएगी नहीं, चलेगी और रुक जाएगी. ठीक है ना? तो वी रिक्वायर सस्टेन्ड मोशन. तो हमें सस्टेन्ड मोशन के लिए क्या करना पड़ता है? दिस इज अ कंबशन इंजन. सो वी इंजेक्ट फ्यूल एंड देन वी इग्नाइट. तो स्पार्क प्लग होता है ना, वो इग्नाइट करता है. So that burns inside. So that is why it is combustion engine. So expand होता है, and this wheel due to inertia, so it goes to the full capacity, and then due to inertia wheel comes back, and again it expands and it comes back. तो उसमें क्या होता है? Fuel burns. तो fuel continuously burn करना पड़ेगा, तभी वो expand होगा. Understood? So this is the mechanism. तो हमको ऐसा vibration चाहिए real life. To do any work, we has to force the vibration to keep happening. Is that clear? तो फोर्स में कौन सा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? हाँ? So now there is a different frequency. So I'll give you an example. Like one example of force vibration is when a mother takes a child to the garden, swing में बिठा दिया उसको. Now उसको एक धक्का दिया. So child is happy. Now initially the swing is oscillating at full amplitude, so is happy. जैसे वो कम होने लगता है, so mother has to resupply that energy. She has to continuously, periodically reapply. Okay. Now the swing is oscillating with the frequency with which the mother is pushing the swing. So now it is not natural frequency of the swing. Okay. So when you force the oscillation to take place by some external periodic force, so now the oscillations are taking place at the frequency of the external periodic force, and it is called force vibration. Is that clear? So force vibration ka frequency is the periodic frequency of the applied force, by which you are then, accommodating the lost energy, so that the oscillations are sustained. Is this clear? What is force vibration? So force vibration mein the frequency is this. Now what is resonance? Now resonance is a special case of force vibration. Resonance is a special case of force vibration when the forced frequency matches the natural frequency. Let us say swing frequency was 10 oscillations per second. बहुत ज़्यादा हो गया. 2 oscillations per second. And mother is also applying the push 2 times a second. Then you will realize that the swing actually takes place with much larger amplitude. So resonance is a special case of force vibration when the external frequency of the applied periodic force matches the natural frequency of the swing, because every object has its natural frequency.
And if the external force is applied at that frequency, then the vibrations takes place with exceedingly large amplitude. That is called resonance. That is what happens in chorus. When every singer, right, is singing at the same level, then suddenly the chorus will be very loud. Effort applied is same. Like if the individual singer sings, it won't be much appreciated, right? But suddenly everybody is employing same energy, singing at the same level, but the moment frequency matches of everyone, then you hear a very loud sound. Okay? So that's what is resonance. So resonance is basically matching of frequencies. And it has many practical applications. So just like frictional force, resonance has some good uses and some bad uses also. Can you tell me when is friction good and when it is bad? What are the good uses of friction? Braking. If you did not have friction, will the vehicle be able to stop when you apply brake? No. So braking is good. Even walking. If the surface is slippery, will you be able to walk? So you require some minimum friction to be able to walk. So these are good uses. What are the bad applications? Energy is lost. In a machine with many moving parts rubbing against each other, it gets heated up. So we use lubricants, right? So that less energy is lost. So that is bad use of friction. Likewise, resonance में क्या होता है? When is good resonance? When you tune your television or transistor set to a particular station, so that work on the principle of electrical resonance. Like in the atmosphere, there are thousands of stations all over the globe. Okay, thousands of stations are broadcasting their frequencies. Every station or every channel has a different frequency. Now your transistor will play which one? So your transistor also have an electrical oscillator inside. So you have to tune your transistor to the frequency that you want to listen. That signal will be picked because at that when the transistor frequency matches the frequency in the environment, a very high amplitude electrical signal now oscillates in your transistor, and that is amplified. And you will listen to only that station. Okay? So that is the electrical resonance. So electrical resonance helps you tune to a station of your choice. Right? And in literal, like in English also we use, our thoughts are resonating. Means we think alike. तो वहां से आता है. Okay? We sometimes say reciprocating or echoing. So these kind of words are used in general English also. Resonating वहां से आता है. When there is a matching of frequency. Is that clear? Then what is the bad use of resonance? I said every object has its natural frequency, right? So every building also will have its natural frequency. Now earthquake comes in a region. Not every building falls. Any geography, if it is hit by some earthquake, do every building fall in that region? No. The one which fall, their frequency must have matched the seismic frequency. Earthquake में जब भी वो plates are shaking, one of the building's frequency must have been very close to it. So that would have generated very large amplitude oscillations, and at a certain angle it fell. Okay. Other bad use of resonance is when soldiers, when they do the march past, it's a very synchronized activity. So when they are crossing over a bridge, rope bridge, so they are asked to disperse. Because if their marching frequency matches the bridge frequency, it might break the bridge. Because it may start vibrating really large and it will break. Or may cause some accident, some soldier may topple, let's say. Okay? So ऐसा सब है. So resonance has good example as well as bad. Now in vehicle,
if there is a loose nut, right? At some speed, it starts making very loud sound. Have you noticed it? At low gear, when the vehicle is accelerated, it starts making a loud sound. And suddenly when you change speed, the resonance is broken and the sound stops. So अगर वो उस पे हमने continue किया so the loose nut may fall and it may cause accident. ठीक है? So that's not a good use of resonance. Is that clear? ये सारा तुमको higher class में आ सकता है और ज़्यादा. यहाँ पे we have to study resonance for creating loud sound in case of a musical system. So, how many of you are familiar with guitar? Okay. So it has a sound box, acoustic guitar. We're talking about acoustic guitar. So guitar में क्या होता है? एक sound box होता है? हाँ? I'm sure everybody is familiar with this, right? तो ये कैसा होता है इसका shape? This is the sound box. So when you play the strings, okay. So there is a hole here, right? So this is the sound box of the guitar. So when you vibrate the string, it is vibrating string will produce sound, but it won't be very audible if you did not have the sound box. The sound box has air, right? So when you vibrate the string, it then passes the vibration into the air inside the sound box. So that air occupies a large area. So when the large surface area vibrates, okay, it creates vibration, which is then audible. So the resonance is created between the vibrating string and the vibrating air inside the sound box. So that is a application of resonance that will come across. Okay? So vibrations can be caused inside the string as well as in the air. तो हमको और एक vibration है. Is this clear? Is the difference clear first of all? Now we have some applications that we'll see. Difference clear? What have we done quickly? Those who were absent in the last class, right? Can you summarize? No, ये Michael को ठीक है. National vibrations, suppress, tank vibrations, then the resonance, and then the force. Yes. So what is the difference in damped and free vibration? Yeah, you can speak in language you're comfortable. That's fine. Yes. What is damped vibration? In damped vibration, the altitude reduces. Altitude. Oh, sorry. Amplitude. Amplitude. Amplitude reduces, and it is and suddenly the sound dies. But the frequency is good. So why the amplitude reduces? You. Because of so what because of air? If there was no air, it vibrates at the same amplitude. What because of air? What because of air? Friction. Because of air friction. Wherever you have friction, the motion is opposed. Friction always acts opposite motion. So energy will be lost in overcoming air friction. That's why the amplitude will go down. Okay. But still, even in damped vibration, the frequency is natural only. Okay. And what is natural frequency? What is natural frequency? क्या होता है natural frequency? किसी भी object का. Okay, open question to all. Yes. Amplitude constitutes the free vibration. मैं पूछ रहा हूँ what is natural frequency?
Natural frequency is the identity of the vibrating object. तो समझ आया what is natural frequency? हाँ, कैसे बोलेंगे? लिखा हुआ है. Any object when it is disturbed from its main position, rest position, okay, if it is capable of vibrating, it will vibrate with its natural frequency only, okay, and which is unique to the given object. समझ आ गया? I gave the vocal cord example that you remember. So I hope these terms are now clear. Okay. Then what is force vibration? This is forced or natural vibration? This is forced vibration. I just set it in vibration once. So it is natural vibration. मतलब damped vibration taking place. मतलब it is damped. Damped means is amplitude कम होता है ना, damping. That is called damped vibration. And then force में हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं इसको बार बार करता, अभी देखो ये फोर्स वाइब्रेशन, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और मैं जो फोर्स कर रहा हूं वो बराबर नहीं है. इसके लिए इट इज लाइक गोइंग हेवाई. बट इफ आई रियली सिंक्रोनाइज सेम फ्रीक्वेंसी, देन आई गेट लाउड एम्पलीट्यूड. बड़े बड़े एम्पलीट्यूड का मिलेगा और फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी? नेचुरली ही रहेगी. ठीक है? सो दैट्स व्हाट इट इज. ओके. Now we have some example vibrations in a stretched string. ठीक है? जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था गिटार का, उसमें क्या है? स्ट्रिंग इज टाइड एट both the ends. So the same string can be vibrated at different frequency. Every sound has a unique frequency, right? So एक string से तुम एक ही sound निकाल सकते हो कि बहुत अलग अलग? There are only 4-5 strings in a guitar, but every time a different music is composed. So when you pluck a string, right? Do you produce the same sound or different sound? Different, right? So देखो, the smallest frequency will be produced when you pluck in the middle. ठीक है? When you pluck it in the middle, how will it begin to vibrate? It will vibrate like this when the string is plugged in the middle. So this is the smallest frequency, and it is called fundamental frequency. Okay, it's called fundamental frequency F1. Okay. Next. Now when you plug it over here, right? What is it? 1, 2, 3, 4. 1/4. हाफ पे प्लग किया तो एक फ्रीक्वेंसी मिला. अब तुमने क्या क्या किया? उसको 1/4 पे प्लग किया. Now what are you getting? तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. मतलब now you are getting 2 loops. ठीक है? यहाँ पे मान लो F1 था, तो अब यहाँ पे कितना मिलेगा? F2. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग हो गया अभी और वेवलेंथ भी अलग हो गया. स्पीड चेंज हुआ क्या? नहीं, स्पीड कांस्टेंट है. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो गए. तो इस केस में क्या हुआ? V/λ1. और इस केस में क्या हुआ?
V by lambda 2. Okay. If the length of the string is L, so if the wavelength is lambda 1, what is this length in terms of wavelength? I am saying the wavelength produced in this vibration is lambda 1. Is it full wavelength or half wavelength? Huh? Half wavelength. So this length is then equal to lambda 1 by 2. Lambda 1 by 2 is equal to length of the string. यहाँ पे lambda 1 कितना आ गया? E by 2L. First frequency हमको क्या मिला? V by 2L. And this is called fundamental frequency. It is called fundamental mode. Okay? Then the next frequency is the next harmonic. Same string is now able to produce different frequency. And what is lambda 2 here? Now you are getting full wavelength equal to L. Okay? So what will you get here? This is V by L. Right? Or can you write it as 2 times V by 2L? Can you write it like this? And what is V by 2L? 2 times F1. So next frequency is the multiple of the fundamental frequency. Okay? Let us see the next one. Next one. So you are going to the next mode of vibration. Every time one loop is increasing, the way we are plucking. Like that, in this case, what is the wavelength now? Lambda 3. So how many it is? It will be 3 lambda 3 by 2 total. What is the total length now? So in each case, the length of the string and the wavelength is related. So what is F3 now? So what is this total distance? This is so it is 2 by 3. Are you with me? What is lambda 3 now? 2 by 3L. Because 3 by 2 lambda 3 is equal to L. What is lambda 3? In terms of L, 2 by 3L. So you get 3 times D by 2L. ये आ जाता है तुम्हारा 3F1. So what is the multiple? You are getting all multiples of the fundamental frequency. Sound is different, but it is multiple of the first frequency only. अब next में तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 times F1. So the ratio of frequencies ये ratio मिल रहा है तुमको. In case of a stretched string, the frequencies produced are in the ratio of 1:2:3:4. Means both odd and even harmonics are present. Is that clear? All frequencies. These are called odd frequency. 1, 3, 5. Okay. So these are called odd frequency. And even is also present. 2, 4. This is present. Is that clear? So ये तुमको textbook जब पढ़ोगे तो ये कहीं पे मिलेगा. So whenever the sound vibrations are caused in a stretched string, you get frequencies in the ratio of 1:2:3. ठीक है? इस पे numericals आते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ.
So vibrations in a stress strain. Next is vibrations in air column. अब एयर कॉलम कहां पे आएगा? फ्लूट, जो पाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें क्या वाइब्रेट होता है? उसमें तो स्प्रिंग होता नहीं, फिर भी साउंड आती है। क्यों? हाँ, होल्स होता है। तो उसमें क्या होता है देखो, तो उसमें दो केस बनते हैं। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। सेकंड क्या है? पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, ये दो टाइप के केस बनेंगे। पाइप ओपन एट बोथ एंड का क्या एग्जांपल है देखो, जैसे तुम्हारा ये पेन का कैप, एक साइड क्लोज है, ये साइड ओपन है। अगर तुम इसमें फूंक मारोगे आवाज आएगी, ठीक है ना। अभी इसका मैंने फ्लूइड बना दिया, तो मैं इसमें अलग अलग जगह पे होल कर रहा हूँ। तो अलग अलग जगह पे होल है, फिर मैं फिंगर से जब क्लोज करूंगा तो आई एम एक्चुअली चेंजिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉल। अंडरस्टूड? इफ आई हैव अ फ्लूइड विद लेट्स से 3 holes here, if there is no hole, right, एक ही ओपन एंड में, so I have just one length of the air column. But if I have multiple holes, I close these last 2 fingers, तो air column इसका छोटा हो गया, so I can vary the length now in this case. तो यहाँ पे when the pipe is closed at one end, मतलब second case वाला, और यहाँ पे कैसा पाइप है, दोनों साइड में ओपन, ऐसा। तो दो टाइप के केसेस हो गए वाइब्रेटिंग एयर कॉलम के। फ्लूइड एक ऐसा भी होता है तो दोनों साइड से ओपन होता है, देखा तुमने? हाँ, उसको यहाँ सामने से ऐसे ब्लो करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी बनता है, उसमें ऐसा फ्रीक्वेंसी बनता है, ऑल मल्टीपल्स आर प्रेजेंट। मतलब इसका जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है F1, और उसका जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगा, और उसका जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1:2:3:4, ऐसे सब है इसके। लेकिन इसमें जो बनता है वो कैसा बनता है? 1:3:5. In this case only odd multiples. In this case both odd and even. Don't worry about this calculation, that you are not supposed to know. What you are supposed to know is only the result. ठीक है? तो string में all types of frequencies are possible, both odd and even. Pipe open at both end में, both odd and even. These two are similar cases. But when the pipe is open only at one end, then only odd multiples are possible. किसका odd multiple? Fundamental frequency. Fundamental frequency or fundamental mode is smallest frequency. ठीक है, वाइब्रेशन विद स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये चीज क्लियर होगी? थिंक ओवर इट एंड लेट मी नो। ठीक है, सो द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस इज, you can see there are so many questions out from this. ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। Just read on page number 4, ये वाला जो पार्ट है, पेज नंबर 4 and 5, उसमें तो दिए ही नहीं।
Check your textbook. Topic is free or natural vibration. Volume and area. You have the textbook? In unit D, I think. D or C, the last, it should be C. क्योंकि और एक unit बाकी है. Characteristics of sound. Check in unit D. Unit C, sorry. Unit C of cellular. तुम्हारे बुक में भी है. Give me one cellular. अरे तो बोलते cellular लाने ही छोड़ दो. तुम्हारा तो ब्रदर हो गया ना देखो. So don't worry, but he will not be able to answer questions. ये देखो, ये जो ratios दिया हुआ है, ब्रदर से भी है. It is available at page number 168. Under the topic 4. Under topic 4 and 7. ये दोनों ऐसे description में दियो. ठीक है? तुम अपने ब्रदर वाले बुक पे भी जाके देखो. Air column and stress strain का frequency. ठीक है? और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? जैसे बिल्डिंग को कुछ एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है या पेंडुलम को एक यूनिक फ्रीक्वेंसी है. व्हाट डिसाइड्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी? द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, व्हाट डिसाइड्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी? द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब सिंपल ऑब्जेक्ट लाइक पेंडुलम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम? What is the frequency of the pendulum? What is time period of the pendulum? Time period of the pendulum you did in 9th standard, 2 pi root L by G. So frequency क्या हो जाएगा उसका? Reciprocal. So that frequency depends on length of the pendulum. सुन रहे तुम लोग? We are discussing on what factor the natural frequency depends. It depends on the size of the object. We are talking about a pendulum. So for pendulum, the frequency is 1 by t. So it will be reciprocal of the time period of pendulum, which you did in 9th standard. Okay. Then, what is the frequency given in case of stretch string? We just saw it is given by V by 2L. Correct? So what is V in this case? How is V or the speed of sound given in case of a solid medium? First lecture I had given you that. क्या था V? Root T by M. ठीक है? So for this case, F is equal to D by 2L, which is equal to 1 by 2L root T by M. I had given you that. And what is M in that formula? Mass per unit length. Okay? And mass per unit length can be given as 1 by 2L. This is how it can be given as. What is it? Area into density. Mass per unit length क्या होता है देखो? Since M is equal to mass per unit length, L is the length of the string, M is the mass of string. And what is mass? Volume into density. Mass is volume into density. And what is volume? Area into length divided by L. Area क्या है? Area of cross section of the string. Area of cross section of string is circle. ये L खत्म हो गया तो क्या बचा? This becomes pi r squared. तो बुक में तुमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया. This is given.
I just told you how it comes. This you need not remember, but some students like I have, unless I know, I can't remember. So this is how you can easily derive. Okay? So this formula somewhere in your book you'll find. Selena में तो है, I'm not familiar about it. ठीक है? Is that clear? तो कभी कभी इसमें questions आते हैं. Question कैसा आएगा? What happens if the tension? What happens to frequency if the tension in the string is increased? क्या होना चाहिए frequency को? It should increase. What happens if the radius of the string is increased? गिटार में जो थिक वाले इसको पता होगा. Thick strings in guitar, does it have high frequency or low frequency? Do you play guitar? अच्छा, फिर नहीं पता. जो thick string होता है, उसकी frequency कम होती है. उसका जो sound आएगा ना, बहुत flat sound आएगा. लेकिन thin वाले का sound बहुत sharp आता है. ठीक है? So high frequency is always sharp. Is that clear? तो इस पे ऐसे questions आ सकते हैं. The variation of frequency with respect to the dimension of the stretched string. Is that clear? Okay. This chapter is the chapter because future physics lies on waves only. ठीक है? तो इसमें बहुत सारे concepts हैं. I don't know how much they've taught you in school. Is it taught in school yet? Okay. तो ये formula मेरे को यहाँ पे दिया हो. This formula is given here. Directly the formula is given on page number 5. Okay. All right. Now I will discuss some experiment directly from the question. ये वाला question देखो page number 16 पे. Everybody open question number 16 on page 16. This is a question on resonance. ठीक है? Okay. Shall we do that question or first we should do solved example? Come on page number 12. We'll come to that. Come on page number 12. See solved example 1. Okay. Those who are present in the last class, you might have done this question. Okay. Page number 12, question 1. So, which vibration is of largest amplitude? I'm talking about this question. Which has largest amplitude? Figure B. Okay. जिसका displacement, vertical displacement ज़्यादा है. So that is figure B. Which vibration is of least frequency? C. जिसमें एक ही loop है. Number of cycles per, what is frequency? Number of cycles per second. जिसमें एक loop है उसमें कम cycle. ठीक है? Loop represents number of vibration. जिसमें एक ही loop है this frequency. What is the ratio of frequency between A and C? What is the ratio of frequency between A and C? Huh? 3:1. Yes. C को अगर तुमने least frequency ले लिया तो ये इसका 3 times होगा. ठीक है? 3:1. Go by the loop ratio.
क्योंकि हमको पता है अगर इसका फ्रीक्वेंसी 1 लिया तो इसका क्या होगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। इसका f1 लिया तो ये क्या होगा 3f1, अभी समझाया मैंने। So this will be 3:1. What is the ratio of wavelength between B and A? B and A. What is the ratio? Hmm? What is the ratio of wavelength? Wavelength अलग अलग मान लो ना, क्या था इसका wavelength? ये कितना है? किसका किसका रेशियो निकालना है? B and A. तो B का क्या है? lambda 2 is equal to 3/2 lambda 1. तो lambda 2 by lambda 1 3/2, यही है ना? Is it 3/2? This is how you do it. समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे दोनों के वेवलेंथ इक्वेट कर रहे हैं। वेवलेंथ क्या होता है? पूरा एक एक क्रेस्ट और एक ट्रफ एक वेवलेंथ होता है, लेकिन वेवलेंथ अलग अलग है। ये क्या हुआ, इसका एक्चुअली वेवलेंथ यहां से यहां तक ही है, और ये कितना है λ/2 है। सो λ1 प्लस λ/2 कितना हो गया 3 λ/2, ठीक है ना। ईच लूप इज λ1/2, तो 3 λ1/2, तो इसका 3 λ1/2 इज इक्वल टू इसका λ2, और ये ए है और ये बी है। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? तो पूछो ना क्या हैव यू अंडरस्टूड, मतलब लिटिल बिट क्या पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ये दोनों स्ट्रिंग में वेवलेंथ का रेशियो निकाल। अभी वेवलेंथ सेम है क्या दोनों वेव में? नहीं, इसका वेवलेंथ छोटा है इससे, तो इसका मान लो हमने वेवलेंथ, क्योंकि ये फर्स्ट आ रहा है, इसका वेवलेंथ हमने λ1 मान, यहां तक λ1 है ना। ये कितना है λ1/2, टोटल कितना हुआ 3/2 लैम्डा, ठीक है। और ये क्या है λ2। हमको रेशियो किसका निकालना है, ए वर्सेस बी, है ना। ए वर्सेस बी निकालना है कि बी वर्सेस ए, क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अब बी इज टू ए निकालना है ना, तो λ2 इज इक्वल टू दिस, बस समझ आ गया। तो खाली लेंथ कंपेयर किए, तो ये हो गया न्यूमेरिकल। दूसरे केस में क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाले केस में क्या है, वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर अंडर सम टेंशन प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, व्हाट लेंथ ऑफ वायर विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बारे में। इस फॉर्मूला में क्वेश्चन किसके किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बारे में। तो अभी Tm2 ये सब तो कांस्टेंट है, तो व्हाट रिलेशन यू आर गेटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इस केस में इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या मिल गया यहाँ पे, F into L is equal to constant, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है मैं जो करवा रहा हूँ यहाँ पे। यानी अगर अलग अलग सिचुएशन बनता है, मतलब F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, जो भी कॉम्बिनेशन है लेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, इक्वल टू F3 L3 ऐसा है। तो ये फॉर्मूले से तुम ये क्वेश्चन करो, ठीक है। वो बड़े फॉर्मूले को उसने प्रोपोर्शनलिटी में they have transformed it like this,
Are you understanding, guys? No, you are watching into air. क्या बताया मैंने? समझ आ रहा है सबको? You have to really stress yourself to listen to me. जैसे तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करके बुक पढ़ना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें तो पढ़ोगे और ऊपर से याद है। तो यहाँ पढ़ लो, स्कूल में एक बार रिवाइज होगा, फिर आगे क्वेश्चन करो, ठीक है? फॉर्मूले के फॉर्मूले बन रहे हैं, क्योंकि गिवन सिनेरियो के क्वेश्चन फिर से करो। वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर अंडर सम टेंशन, टेंशन दी गई, प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। एल दिया, फ्रीक्वेंसी दी। अब पूछ रहा है व्हाट लेंथ ऑफ वायर विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 102। सेम वायर में अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो सकता है, हमने देखा है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी प्लग इट। तो लेंथ क्या हो गया? लेंथ कैसे चेंज होता है? अभी गिटार में हमने दो जगह पे फिक्स कर दिया, अब उसका लेंथ कैसे चेंज होता है? जब हम फिंगर रन करते हैं तो वहां पे जहां फिक्स था वहां से हम नीचे आ गए, लेंथ चेंज हो गई। बात समझ आ रही है? ऐसे चेंज होता है। लेकिन what do we know? We know this relation. Frequency and the length for a given wire will always be constant. ठीक है? इसके लिए चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी लेंथ हो, उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम आए। तो ये इसमें यूज किया कॉन्सेप्ट। गेटिंग इट? एक दो बार ट्राई करो, अगर नहीं समझ रहा है तो मैं फिर बताऊंगा। So now you'll be able to do all the questions. ठीक है? Now very quickly, let's come to the resonance का question. ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में क्या दिख रहा है तुमको? वाटर फिल किया हुआ है ब्यूरेट में, और वाटर के ऊपर क्या है? एयर कॉलम। कैसे टाइप का एयर कॉलम है ये? ओपन एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन एट वन एंड ओनली, दूसरे एंड में क्या है? वाटर। अच्छा, आप पढ़ो इसको, क्या बोल रहे हैं? नेम द फिनोमिना इलस्ट्रेटेड बाय अबव एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे हो तुम? Length of the air column is adjusted by opening the tap of the burette. At a length of 5 centimeter of air column, loud sound is heard. मतलब 5 सेंटीमीटर का जो कॉलम रहता है, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट हो रहा है। पहले समझो पूरा वाटर फिल था, लेकिन 5 सेंटीमीटर पे लाउड साउंड आया। क्या फिनोमिना है? रेजोनेंस। मतलब जैसे ये एयर कॉलम 5 सेंटीमीटर का हुआ, वो लेंथ में तुमको क्या सुनाई दिया? लाउड साउंड, तो रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस हो गया, तो जो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है वही इस एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी हो जाए। ठीक है? अच्छा, फिर क्या हो रहा है? वाई, सो एक आंसर हो गया रेजोनेंस। वाई इज अ लाउड साउंड हर्ड एट दिस पर्टिकुलर लेंथ? इसका आंसर क्या होगा? At this time, the frequency of the tuning fork matches the frequency of the vibrating air column. Fn equal to Ff हो गया। What is the force frequency? Tuning fork का frequency. ठीक है? The natural frequency of the tuning fork matches the force frequency of the vibrating air column. ऐसे हो रहा है। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस। If the present tuning fork is replaced with a tuning fork of higher frequency, should the length of the air column increase or decrease? Decrease. Very good. क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है? वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लो, ये वाला। चलो ये वाला तुम खुद से कर पाओगे। ये एक साउंड बॉक्स है। रीड क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, फटाफट। रीड क्वेश्चन 16। समझ में आया क्या? देखो, ये दो साउंड बॉक्स दिया है, यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक रख दिया। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक क्या है? ई। उसको एक्स पे रखा, तो वो वाइब्रेशन फोर्स करता है एयर कॉलम को, तो एयर कॉलम वाइब्रेट्स।
और वो नेबरिंग वाई में चला जाता है, तो वाई का वाइब्रेट होता है। अब इस पे नॉन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक रखा हुआ था, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते। ठीक है, तो अब उस पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? तो बी को जब वाई पे रखते हैं तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बी देन? 320। जो बी का फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस आया उसको कब कब आया? बी को रखने पे। व्हाई डज बी प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड? रेजोनेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, वो तुमको देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस मोर। इज इट टाइम? 1 मिनट है, एक क्वेश्चन और ले लेते, चलो। टिल द बेल रिंग्स। ये देखो, और एक रेजोनेंस का एग्जांपल है यहाँ। क्या है इसमें? इस एग्जांपल में देयर आर 4 पेंडुलम्स। सुनो ध्यान से, अभी बहुत जल्दी मत करो घर जाने की, सुन लो ये क्वेश्चन ध्यान से। देयर आर 4 पेंडुलम्स, दे आर हैंग्ड ऑन अ रबर रॉड। कैसा रॉड है? रबर का है, इलास्टिक रॉड है। अभी इसमें जो पेंडुलम ए और बी है, मतलब थर्ड पेंडुलम बी है, सेकंड सी है और लास्ट वाला डी। तो सी और डी का लेंथ अलग अलग है, लेकिन ए और बी का लेंथ सेम है। तो पेंडुलम का लेंथ सेम होगा तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ए और बी आइडेंटिकल है। अब देखो होता क्या है, अब तुमने समझो ए में वाइब्रेशंस कॉज किया, बाकी नॉन वाइब्रेटिंग थे पहले, तो क्या होगा? ये जो शाफ्ट है वो रबर का है, सो फोर्स वाइब्रेशन विल बी प्रोड्यूस इन ऑल। ए में तुमने वाइब्रेशन कॉज किया, so it will vibrate with its natural frequency and it will force other pendulums also to vibrate. After some time we see that A and B, they both vibrate with a large amplitude, whereas C and D vibrate with a small amplitude. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ए में और बी में रेजोनेंस क्रिएट हो गई, सारे तो फोर्स ऑफ वाइब्रेशंस है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स वाइब्रेशन है। इन दोनों में रेजोनेंस हुआ, बाकी इन दोनों में ओनली फोर्स वाइब्रेशन, but the amplitude is now less. Why? Because frequencies are not matched. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी पढ़ना, और then we'll discuss more questions in the next class. Okay.